हे गाइस, वेलकम बैक। आप यहाँ पे नए हैं तो मेरा नाम है स्मिता। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बहुत ही आसानी से गोल्ड स्मोकी आइज कैसे करते हैं ये सिखाऊंगी। इस टाइप का लुक ब्राइडल या वेडिंग गेस्ट या पार्टीज के लिए बहुत ही अच्छा दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आईब्रोज को फिल इन करने के लिए मैं एक आईब्रो पेंसिल यूज कर रही हूँ। ये है बेनिफिट का प्रिसाइसली माई ब्राउज और शेड है 4.5। आप देख सकते हैं कि आईलिड थोड़ा ऑयली है एंड कलर भी थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू अदर स्किन टोन। तो लिड को क्लीन अप करने के लिए मैं एक कंसीलर यूज करूंगी। ये है मिलानी कंसीलर इन द शेड 145 एंड इसको लगाने के लिए मैं एक फ्लैट आईलाइनर ब्रश यूज कर रही हूँ। ये है एल्फ का आईलाइनर ब्रश। और क्रीज के ऊपर सेट करूंगी एक ट्रांसलूसेंट पाउडर से। ये है एयरस्पन ट्रांसलूसेंट पाउडर। इससे आपका ब्लेंडिंग आसान हो जाता है। आई शेडो एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट टाइप्स का ब्रशेस होता है। मैं क्या यूज़ करती हूँ रेगुलरली ये बताऊंगी। इस टाइप को लॉन्ग ब्रिजल्स एंड राउंडेड टॉप को ब्लेंडिंग ब्रश बोलते हैं। इससे आप आई शेडोज को सॉफ्टन कर सकते हैं, जैसे क्रीज में ट्रांसिशन लगाने के लिए या आउटर कॉर्नर को सॉफ्टन करने के लिए। और इस टाइप का फ्लैट ब्रशेस को फ्लैट शेडर ब्रश कहते हैं। इससे आप आई शेडोज को अब बहुत ही आसानी से लिड के ऊपर लगा सकते हैं। और फ्लैट ब्रशेस से आप आई शेडोज को प्रेस भी कर सकते हैं। इससे आपका पिगमेंट पे ऑफ भी बहुत ही अच्छा होता है। और इन ब्रशेस जो राउंडेड टॉप्स और स्मॉलर टॉप्स होता है, इनको पेंसिल ब्रशेस बोलते हैं क्योंकि ये पेंसिल जैसे दिखता है। इससे आप डिटेल्ड वर्क कर सकते हैं, जैसे आई शेडो को लोअर लैश लाइन पे लगा दिया या इनर कॉर्नर में लगा दिया। इसके लिए यूज कर सकते हैं आप। आज मैं आई शेडो पैलेट जो यूज कर रही हूँ ये है गुड एज गोल्ड पैलेट फ्रॉम कलर पॉप। पहले ट्रांसिशन के लिए मैं एक ब्राउन शेड यूज कर रही हूँ। इसका नाम है डिग इन यू। और इसको क्रीज में सॉफ्टन करने के लिए मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश यूज कर रही हूँ। ये है सिग्मा का ब्लेंडिंग ब्रश इन E40। अगर आप बहुत ही पास से होल्ड करेंगे तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है। इससे आपका ब्लेंडिंग ठीक नहीं आएगा, तो इसलिए थोड़ा दूर होल्ड कीजिए। ट्रांसिशन शेड को पूरे क्रीज में लगा के सॉफ्टन करूंगी। और आउटर कॉर्नर को डीपन करने के लिए मैं एक डार्कर ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ। ये है बिग ब्रोच। और इसको लगाने के लिए मैं एक और ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करूँगी। ये है छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश फ्रॉम हिप डॉट।
और लिड के ऊपर एक मेटालिक गोल्ड शेड यूज़ कर रही हूँ, ये है गोल्ड स्टार। पहले फिंगर से प्रेस करूँगी और एजेस को क्लीन अप करने के लिए एक फ्लैट शेडर ब्रश यूज़ करूँगी। और आउटर एज को सॉफ्टन करने के लिए फिर से एक छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ। लोअर लैश लाइन में मैं पहले ट्रांसिशन शेड लगाऊंगी डिग इन यू, और इसको लगाने के लिए मैं एक कलर पॉप का पेंसिल ब्रश यूज़ कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट मैं आईलाइनर लगाऊंगी, ये है मेबेलिन का जेल लाइनर इन ब्लैक। इससे पहले मैं वाटर लाइन को टाइट लाइन करूंगी और उसके बाद आईलाइनर भी लगाऊंगी, बोथ इन टॉप एंड लोअर लैश लाइन्स। फिनिशिंग करने के लिए मैं फॉल्स लैशेस लगाऊंगी, ये है ब्लैक लेबल का ब्रेजन लैशेस। पर उससे पहले मैं अपने नेचुरल लैशेस को कर्ल करके मस्कारा लगाऊंगी। जो मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ ये है बैड गर्ल बैंग मस्कारा फ्रॉम बेनिफिट कॉस्मेटिक्स। आई मेकअप को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैं एक रेड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, ये है कलर पॉप का मेलोनेड। अगर आप चाहे तो नूड कलर लिपस्टिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। और फाइनली मेकअप को सेट एंड सील करने के लिए मैं लॉरियल इनफैलिबल का सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। और ये है फिनिश लुक। आप देख सकते हैं कि कितना आसान है गोल्ड स्मोकी आई बनाना और बहुत ही क्लासी दिखता है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रोडक्ट्स के बारे में, वो सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और मेरे सोशल्स भी हैं, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं मुझे। आई लव यू गाइज सो मच एंड आई विल सी यू सून विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। बाय गाइज।